that case, that has to be a simpler one, because only simple controllers can be that much economically cheap. Also, the second thing is that okay, the types of control what you require in this are quite simple. That means you simply want to vary the speed. ठीक है, तो आपको यहाँ खाली स्पीड वैरी करनी है अगर हम सीलिंग फैन की बात करें. So in that case, what happens is that you have a single requirement, and you don't have any braking sort of requirements. ठीक है, you don't want the fan, you switch it off. ठीक है, आपने ऑफ कर दिया. The maximum requirement is that from this type of drive is that you require a change in speed. That means you require a low output of air from it. You require a large output from air of air from it. ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कोई आपको requirements नहीं है. So these can be taken care of by simple controllers. ठीक है, even the feedback is not required. Any sort of feedback. Feedback का क्या है? If you reduce the um, speed of the fan, so ठीक है, you put from 5 to say 4. अगर 5 speed regulator है आपके पास, so it simply means that at 5 the fan was running at full speed, say 380 400 rpm ऐसे करके. ठीक है, 350 के ऊपर 400 तक होता है maximum speed, depending upon the types of fan what you have. ठीक है, different companies के. So you have a full speed. You have if you reduce the speed, what you see is that you simply have a visual inspection or a feel inspection. कि हाँ ठीक है, पंखा हल्का हो गया. इसे और हल्का करना है तो आप उसे और हल्का कर दीजिए. ठीक है, तो इसमें कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती इन द कंट्रोलर इटसेल्फ, कि आप उसे 380 आरपीएम से या 400 आरपीएम से जो है वो कहेंगे कि अब इसे 300 आरपीएम किया जाए, फिर इसे 250 आरपीएम किया जाए. तो कोई ऐसी प्रेसिशन की ज़रूरत नहीं है. यू ओनली कैन हैव ए वर्किंग बाई सिंपल इंस्पेक्शन और फील कि हाँ ठीक है, पंखा हल्का हो गया, इसे और हल्का कर देते हैं या ठीक है इतना. ठीक है, सो दिस इज द फीडबैक. सो दिस इज एन ओपन लूप फीडबैक. ठीक है, तो आपने कहा हाँ ठीक है, तो एंड इट रिमेन्स वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. The second thing is that when it is not required, you simply say, are you, if you are leaving the room or hall, whatever it is, or you don't require it anymore, then you simply switch it off. Okay. And as soon as you switch it off, the input to the fan goes off, and it stops in 1 or 2 minutes. ठीक है, यू आर नॉट बॉदर्ड के अब वो कितनी देर में रुकेगा. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती इसमें कि अब कितनी देर में रुकेगा, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी. द सेकेंड थिंग इज दैट it is say 100 whatever energy that is contained in that motor load system is being dissipated in the form of air friction, say over here, or mechanical friction be inside the motor, and that makes it stop after 1 or 2 minutes or half a minute, जैसा भी हो. ठीक है, so that much amount of energy is say immaterial when you talk about energy recovery. Extract that energy that is being contained in the motor load system after the machine has been switched off is very small. So if you employ any provision for it, in that case what will happen that it would be about to useless because a very small amount of energy is involved. The second thing is that the controller complexity will increase to a very large scale. Okay. And obviously that will increase the cost. The main thing is that we have a regeneration sort of thing in all the drives, electrical drives, to have two things. The first thing is that to make the operation economical. Okay, if you recover that energy back that is contained in that motor load system, you make it economical, plus you make the control of the machine to be precise. इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें से जब उसे ब्रेक कर रहे हैं तो बहुत ही प्रिसाइजली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है. मैकेनिकल ब्रेकिंग तो आप उसे किसी फ्रिक्शन मोड में लाके फिर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज नॉट वेरी प्रिसाइज.
तो प्रिसाइज बहुत होती है। और द थर्ड थिंग इज दैट ऑब्वियसली इट इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ आती है आपके पास, क्योंकि आप एनर्जी रिकवर कर लेते हैं वापस। somebody's mic has been open, please switch it off। किसी का माइक खुला हुआ है, उसे ऑफ कर लें। So now what you have is that when you have when you have when you recover the energy back, the options, the say the use of it. The first one is that the energy is conserved. The second thing is that the braking is precise, and the third thing is that obviously it is environment friendly. But all these things happen to be there only when you have uh, these when you have these costs in, यानी आप कोई भी चीज़ अगर अचीव करना चाहेंगे तो उससे ज़्यादा कीमत नहीं लगा देंगे उसे अचीव करने में, यूज़ करने में। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी थोड़ी सी एनर्जी इन्वॉल्व है, so you're not going to put a very complex converter that can actually regenerate। और रीजनरेशन के बाद मिलेगा क्या? ठीक है, जो कुछ मिलेगा वो वर्थ नहीं होगा उसके लिए। सो रीजनरेशन इज नेवर डन इन फैक्ट फॉर लो पावर ड्राइव्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाई पावर ड्राइव्स, तो ये बात हुई यहाँ पे सिंगल फेज और थ्री फेज की जब हम बात कर रहे थे, दैट वी हैव अ सिंगल फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम जनरली
Okay, when we talk about these three-phase and single-phase AC drives, we have induction motors and synchronous motors. Am I audible to you now? Yes, Anybody? sir. Am I? Okay, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So, Yes, sir. Audible. fine, fine, thank you. When you talk about single-phase and three-phase drives, obviously single-phase drives employs low amount of power. When we have low amount of power, so the say sense of uh, having a regeneration is not proper. Why? Because a very small amount of power is involved in it. So we go for three-phase systems in which we have an appreciable amount of power that is involved during braking. So now we classify these into as induction motor drives and synchronous motor drives. There are also special categories of drives such as BLDC, brushless DC motor rotor, that is an inverter fed synchronous motor, special cases of it. You have linear induction motors. Okay, so these are considered to be the special cases of also these even induction as well as synchronous. They belong to these types, but they are in fact special cases of it. So again, the very thing what is to be kept in mind is that whenever we have any sort of braking to be done on AC drives, it will be happening on a three-phase system because of the level of the power involved and due to the cost involved in the braking procedure of the converter as well as the setup, all setup. So such that the energy what is being recovered is appreciable to an amount such that it can actually justify the putting of a braking converter into the circuit. So, on the very same lines on which we went through the breaking of the four quadrant operation of uh, so DC shunt motors or separately excited motors, on the very same lines on the we are heading to this this four quadrant operation of a three phase induction motor. Okay, you must have studied the basics of three-phase induction motor in electrical machines 2, sorry 1, electrical machines 1, but still some of the basic explanations will be also given time to time during the study of this topic. So this topic is totally based upon what we covered in the last uh, class about four quadrant operation of DC separately excited or shunt machines. Okay, the very same three types of brakings in case of three-phase induction machine is the regenerative braking, in which the machine regenerates and the energy is taken back into the source. The second one is that you have a plugging or a reverse voltage braking जिसमें हम एक reverse supply लगा के उसे break करते थे. And the third one is the dynamic or the rheostatic braking in which the machine generates the reactive power, generates the regenerates the power that is contained in the motor load system, and then it is being wasted in the resistors that are put at the terminals of the machine. ठीक है. The very same thing happens over here. हाँ, the thing what is to be taken, the basic rules of regenerative braking are to be followed in the very same way that uh, always the current flows from a higher potential towards a lower potential. So whenever the motor is motoring, in that case, what happens is that the supply voltage is greater than the motor induced voltage when the motor is motoring, and when the current is to be reversed or the machine works into generation,
In that case, what happens is that the generated voltage inside the machine should be greater than the voltage that is put at the source. Only then there will be a reversal of current, because the current always flows from a higher potential towards a lower potential. ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके पास एग्जैक्टली exactly रहेगी वैसे ही जैसे हमने वो एक फोर क्वाड्रेंट डायग्राम बनाया था। किसी का माइक अब भी ऑन है तो प्लीज टर्न इट ऑफ। So you have to, if you have to reverse the direction of current, in that case, what will happen is that you will have to make the voltage levels to be appropriate. If the current is to be into the machine, that means the machine motors. In that case, what happens that the source voltage must be greater than the induced voltage in the machine winding. And if the current is to be reversed, in that case, the current in the voltage induced in the machine windings should be greater than the source voltage. So again, uh, because the induced voltage depends upon the rate of change of flux, and as the machine brakes, that flux, that rate of change decreases. So the induced voltage also decreases. So in the very same lines, you will have to put a converter in between the source and the load, such that the source voltage is again reduced to a value such that a direction of current is maintained outward from the machine into the source. Okay. Just let me. ये मोहम्मद यूनुस यूसुफ का माइक ऑन है। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ प्लीज। Okay. So now what we have is that we will have to manage the very same things that if the direction of current is to be reversed, in that case, what happens that you will have to maintain the level of the voltage. And as the speed goes on reducing, the value of the voltage also, the induced voltage also goes on reducing. So we will have to maintain a check of that voltage such that the source voltage side is always less than the machine voltage side, such that a current always travels from the machine into the source on the source side when the machine is braking. Okay. Also, the second thing is that the torque is always proportional to the amount of current जो आपके पास whenever the current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. So obviously that force is proportional to the amount of flux and the amount of current. ठीक है, तो करंट से हमेशा वो प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड दिस reverse current or the generation current actually decides how much torque, braking torque is going to be produced. Okay, so you will also have to maintain this reverse current back into the source in the very same way as that you maintain in case of a DC motor. ठीक है, तो स्पीड कम होने के साथ साथ जो है वो आपके पास उसका वोल्टेज कम होगी जो इंड्यूस हो रही है उसकी आर्मेचर वाइंडिंग्स में, और वो वोल्टेज कम होगी तो साइमल्टेनियसली यू विल हैव टू रिड्यूस द वोल्टेज ऑन द सोर्स साइड सच दैट the direction of current is maintained. Current always flows from a high potential towards a low potential. The second thing is that
You will also have to maintain the value of that current back into the source by constantly reducing the supply voltage side voltage also, such that the potential difference between the two sides maintains the current at that particular value, such that a proper braking torque is achieved. ठीक है, सो हमारे पास ये तीन तरह की ब्रेकिंग होती है इसमें, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग एंड डायनामिक और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, द वेरी सेम टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग व्हाट वी हैव इन केस ऑफ डीसी मशीन्स। ठीक है, तो इसमें जहाँ तक ये बात आती है, ये तो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं जो डीसी से होती हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसी, there are certain things that are also to be considered when you have AC, such that if you have a three-phase system, you will have to make sure that mm, the supply sequence is not altered, it is proper in all the cases, in case of motoring as well as regeneration, यानी दोनों cases में वो same रहे, that is to be taken care of। ठीक है, और उसके अलावा जो है फेज डिफरेंस, फेज शिफ्ट नहीं होना चाहिए आपके पास। ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन में जो बातें थी, ऑब्वियसली दे रिमेन लाइक दिस बिकॉज व्हेन यू आर सप्लाइंग फ्रॉम ए सोर्स, आप एक सोर्स से एक मोटर चला रहे हैं, इंडक्शन मोटर, तो जब उसे वापस करेंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, बट स्टिल नाउ you must from the basics of induction motor operation, the rotor slips back the stator magnetic field। ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्लिप स्पीड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी अच्छे से। ठीक है, तो रोटर की स्पीड हमेशा जो है वो आपके पास उससे कम होती है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से, व्हेन द मशीन इज इनटू मोटरिंग। अब हम इस पे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, एंड एज द स्पीड इंक्रीजेज एंड रीचेस टू the synchronous speed, say it is completely equal to or exactly equal to synchronous speed, in that case there won't be any relative motion between the stator magnetic field and the rotor, and there won't be any induced EMF in the rotor conductors। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो हमेशा मोटरिंग ऑपरेशन थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड से नीचे नीचे होता है। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव this regeneration और फॉरवर्ड रीजनरेशन, तो उस केस में क्या होता है कि दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ओनली रिवर्स्ड व्हेन द स्पीड of the rotor crosses the synchronous speed। that means इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मशीन का जब भी ऑपरेट होता है, उस मोड में जब भी ऑपरेट होता है जब आपका rotor moves past the stator magnetic field or the speed of the rotor is greater than the synchronous speed। ठीक है, तो जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इसमें देखेंगे आपका टॉक प्लेन पे, तो जो आपके पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग में आपके पास एक नॉर्मल ऑपरेशन आता है, एंड यू हैव ए स्टार्टिंग टॉर्क ओ सी ऑफ द अमाउंट ओ सी। ठीक है, ये जीरो सी के बीच में, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क, इट इज इट दस मोटर स्पीड्स अप बिकॉज ओमेगा आपका वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे सी पे जो है वो स्पीड जीरो है आपके पास, ओमेगा मोटर जो है वो जीरो है। नाउ एज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ओमेगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इट टेक्स ए पाथ जहाँ पे आपका फॉरवर्ड मोटरिंग लिखा हुआ है, इस कैरेक्टरिस्टिक पे चलेगा ये, एंड इट रीचेज अ पॉइंट एफ, दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे मोटर जो है आपके पास इस ऑपरेट करता रहेगा। रिमेंबर दैट दिस एफ इज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ एफ है, जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, ये डब्ल्यू एम एस ओमेगा एम एस से कम है। ठीक है, और स्पीड एट द टाइम ऑफ स्लिप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वन होती है, यू वेरी वेल नो इट, और जैसे ही ओमेगा पे या ओमेगा एस पे पहुंच जाती है तो स्लिप आपके पास ज़ीरो हो जाती है। तो एक बहुत थोड़ी सी लो स्लिप पे जो है वो ये ओमेगा इस पे एफ पॉइंट जो है वो आपका ऑपरेट होता रहता है नॉर्मल आपके पास मशीन मोटरिंग ऑपरेशन में। Now what happens is that at this point of time, say f,
यू वांट टू ब्रेक द मशीन। ठीक है, आपके पास एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर चल रहा है और अब आपको अब उसे ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब रोक, BRAKE, ब्रेक करना है। ठीक है ना, तो जब उसे ब्रेक करना है तो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू रिड्यूस द स्पीड। और ब्रेक करेंगे आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग से। सो यू विल हैव टू रीजनरेट the energy that is contained in the on the shaft of that motor load system। ठीक है, तो the first condition for the reversal of current is obviously the level of potential, जो हमने DC मशीन में भी बात करी थी कि मशीन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। मशीन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए आपके पास सोर्स पोटेंशियल से। So you put a converter in between it. So you so you put a converter in between it. Okay. So in this case, this is the first thing, that is the level of voltage that is to be taken care of. And the second thing is that the machine should enter into generation mode. For that purpose, what should be the criteria is that the speed should be greater than the synchronous speed। ठीक है, तो आपको F पॉइंट पे ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब स्पीड कम करनी है इसकी। ठीक है, जब इसकी स्पीड कम करनी है आपको, तो obviously if you that can be done only by taking out the energy contained in that motor load system। ठीक है, and the second thing is that your induction machine will be into forward regenerative braking mode only in the second quadrant। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसमें, जो ये डायग्राम है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे लिखा हुआ है AE और फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स BAE, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास, जब तक इस कैरेक्टरिस्टिक पे नहीं आ जाएगा, जब तक आपके पास मशीन जनरेट करना नहीं शुरू करेगी। दैट मीन्स फॉर एन इंडक्शन मशीन टू जनरेट और वर्क इन अ जनरेटिंग मोड, it has to work at speeds greater than synchronous speed। And in case of motoring, you always work at a speed less than synchronous speed। And if you want to break it, break का मतलब you have to further reduce the speed। So it is always be going to be the speed is always be going to be less than synchronous speed। तो वो कंडीशन क्या करानी है हमें? कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड होगी तो ही मशीन रीजनरेशन में जाएगी या जनरेटिंग मोड में जाएगी। बट यहाँ मोटरिंग में काम कर रही है, इसका मतलब सिंक्रोनस से कम पे काम कर रही है और उसे फर्दर ब्रेक करना है हमें, यानी और नीचे स्पीड लानी है, क्योंकि जिस स्पीड पे हमारी चल रही है उसे ब्रेक करना है, तो इसका मतलब और नीचे लाना है उसे। सो दीज आर सर्टनली अपोजिट कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि आपको जब मोटर कर रहा है इंडक्शन मोटर, तो स्पीड सिंक्रोनस से कम है, आपको ब्रेक करना है यानी उससे और कम करनी है, और रीजनरेशन पॉसिबल होता है ओनली एट स्पीड्स ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सो टू सफाइस टू दीज कंडीशंस यू विल हैव टू पुट सच कन्वर्टर्स, अभी हम आगे चल के देखेंगे, बताएंगे जब उसे, यू विल हैव टू पुट सच कन्वर्टर्स that can actually make the machine to work beyond synchronous। And for that purpose, what you will have to do is that you will have to change the frequency of the supply such that the synchronous speed 120 f upon p होती है synchronous speed। तो अगर आप f को कम करते हैं तो what will happen, synchronous speed भी कम हो जाती है। तो we will be tracking the synchronous speed of the machine to be less than always the speed at which the machine is running। यानी जैसे अगर पॉइंट F पे आपके पास मशीन रन कर रही है और आपको इसे ब्रेक कराना है, तो यू प्रोवाइड इट विद ए लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई, लोअर देन द रेटेड वन। तो व्हाट विल हैपन, जो आपके पास सिंक्रोनस स्पीड का जो पॉइंट है, या जो सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा एम स्केल पे है, वो कम पे आ जाएगी। दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन विल बी ऑल्टर्ड,
by reducing the frequency. And now if the speed of f will be on the स्केल ऑफ वाई एक्सेस, जो आपके पास एफ की जो स्पीड है, एफ जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है, वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पे चला जाएगा अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। तो ये दिस इज नॉट दैट मच सिंपल थिंग कि हम इतनी आसानी से करते हैं। विल बी यूजिंग ए कन्वर्टर फॉर इट। देखेंगे कौन सा कन्वर्टर होता है, अभी आगे चल के ये बात आएगी। और दूसरी चीज़ ये भी आएगी कि what are the conditions in which you can reduce the frequency. It is not that simple condition, हम उसे भी डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो मोटी मोटी बात क्या रहेगी, दैट induction machine always works in motoring mode at speeds less than synchronous. It can only regenerate at speeds greater than synchronous. If you have to brake the machine or electrically brake the machine, it has to regenerate. The only possibility of regeneration of an induction machine that is actually motoring is that you reduce the supply frequency such that the same point of operation or the same speed at which the machine is operating becomes greater than the reduced frequency synchronous speed. Only the machine will regenerate in that condition. Okay. And further, as the machine is further braked, that frequency is again to be tracked to a lower value such that there is a continuous process of braking up till very low speeds. Yani this has to be a closed loop system in which you will have to take care of this. ठीक है। इसका बाकी का पोर्शन जो है इस टॉपिक का जो हम बोलेंगे, वो जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की बात बताएंगे वहाँ पे इस चीज़ को और एक्सप्लेन करेंगे। द सेकेंड थिंग इज दैट ये तो बात हुई हमारे पास क्वाड्रेंट, इसमें फर्स्ट और सेकंड की बात हुई है। ठीक है। द वेरी सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन कैन बी, जो हमने डॉटेड लाइन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हैं रिवर्स मोटरिंग की क्वाड्रेंट 3 में, और रीजनरेटिव रिवर्स रीजनरेटिव ब्रेकिंग की जो है आपके पास क्वाड्रेंट 4 में। तो what is this is that if you simply reverse the phase sequence of the supply, all the things will be reversed. यानी आपके पास मोटरिंग की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, टॉर्क प्रोडक्शन रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन आ जाएगा। और इसी का जो ब्रेकिंग ऑपरेशन आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि दैट वी हैव ए मल्टीपल ऑपरेशन ऑफ मोड्स इन क्वाड्रेंट 2 एंड 4। अगर आप देखेंगे तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स, सॉरी, पॉजिटिव सीक्वेंस सप्लाई है अगर आपके पास, तो तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई गई है हार्ड लाइन से, ये एक्सटेंड करती है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। ठीक है। ऑन द अदर साइड, उस अगर आप रिवर्स फेज सीक्वेंस की बात करें तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल के आती हैं। सो वेन एवर यू आर इन टू एन ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मशीन, you will have to make sure that which is the sequence of the supply phases. Either it is a positive sequenced supply or a reverse phase sequence supply. ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस सप्लाई है तो, या फॉरवर्ड सीक्वेंस है, तो हम एक हार्ड लाइन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलते हैं और क्वाड्रेंट 1, 2 और 4 में ऑपरेशन देखते हैं क्या चल रहा है। And if it is a reverse phase sequence supply, in that case the operation will be in the third, fourth and the second quadrant. ठीक है। तो अगर जहाँ पे क्वाड्रेंट ऑपरेशन 2 और 4 की बात आती है, you will have to first consider that what is the sequence of the phases of the supply. Only then you will consider the characteristics. अगर हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हार्ड लाइन जो कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है मशीन की, वो वाली चीज़ ली जाएगी। और अगर रिवर्स फेज सीक्वेंस है तो डॉटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएंगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड इन फैक्ट द नेमिंग्स विल आल्सो बी चेंज्ड इन दैट केस। इसे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम
इसके कन्वर्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कन्वर्टर्स इस्तेमाल होते हैं इसमें, कैसे होते हैं। तो जब कन्वर्टर ऑपरेशन आएगा तो फिर उस चीज़ को इसको वापस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ द थिंग रिमेन्स इज दैट द four quadrant operation of an induction machine is possible on the very same lines that whenever the current always flows from a higher potential towards a lower potential, so the magnitude of the voltage is to be um, taken care of, plus उसके अलावा the supply sequence, the phase shift is also to be taken care of, plus that whenever you have to brake the machine from that means the machine goes from motoring mode into the generation mode, in that case that is generally only possible using frequency converters that actually reduce the frequency such that the synchronous speed is altered and the machine is made to operate at speeds above the synchronous speed during the braking operation. ओके। सो बाकी इसमें जो है जब जैसे जैसे आएगा इसका प्लगिंग बताएंगे, फिर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, डायनामिक ब्रेकिंग के बारे में बताएंगे, फिर जब कन्वर्टर्स पे आएंगे तो वापस फिर इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड टुडे? No, sir. ओके, No, sir. थैंक यू। हाँ ठीक है। जैसे जैसे अभी ये सब्जेक्ट ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, मोस्ट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर फ्रॉम इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो नई होती हैं, जो आपने इंडक्शन मशीन्स में नहीं पढ़ी हैं, और पढ़ी भी हैं तो इतना ज़्यादा जोर दे के नहीं पढ़े, अभी तक सिलेबस में है वो। तो a lot of things will be more clear when we be developing this topic in the coming lectures. Okay, thank you. Thank you.